So a quick revision of the previous lecture. The vector of the heart depicts the net direction and amplitude of current flow in the heart from negative to positive. The bipolar leads, lead 1, 2 and 3 are the best for calculating the vector. The reason is that we know that lead 1 is at 0 degrees angle horizontal, lead 2 is at 60 degrees angle horizontal and lead 3 is at 120 degrees angle horizontal. So the size of R wave, if it is highest in the lead one, that means the heart has shifted towards the left side. The size of R wave, it is, if the vector of the R wave, it is highest in the lead 2 size of the R wave, that means that the heart has its normal original vector. And if it is maximum, R wave height is maximum in the lead 3, that means the vector has shifted to the right side and there is some problem on the right ventricle or pulmonary stenosis in the heart or of the right bundle branch block. The reason being that we are recording the ECG in time and space. This is the time for atrial depolarization, this is the time for ventricular depolarization, and this is the time for ventricular repolarization. So the ventricular depolarization has got sharp waves. The height of the wave is calculated by calculating the height of the R wave and subtracting the length of the Q wave and that of the S wave from this R wave, and then that is plotted on a graph paper with in three leads, lead 1, lead 2 and lead 3, and it is seen that the vector of the heart will be कैलकुलेटेड जैसा कि आप पिछली डायग्राम में देख चुके हैं. So this is the time where the septum is being depolarized. This is the time when the right ventricle is being depolarized. Then the direction of the current flow goes to this 60 degrees angle. Then the direction of the current flow goes towards the left side because the mass of the left ventricle is much more thicker as compared to the right ventricle. So predominantly it records the depolarization in the left ventricle, although the depolarization is also continuing at this time in the right ventricle. The last portion, this number 4, is actually then the right ventricle has been completely depolarized and the left ventricle is still being depolarized to the base and to the posterior surface, and that is the time when the number 4 line is drawn. That is for the S wave, and because of this number 5 is then you come back to the original point, and this is the loop of depolarization, maximum being in the direction of the from the septum, initiation of the septum to the apex of the heart. And this is how we draw it when we are talking about mean vector through the partially depolarized ventricle at this stage. So how to determine heart rate from the ECG, आपको बहुत सारे methods बताए जाएंगे जब आप practical करने के लिए आएंगे, but the simplest is you divide 60, that is 1 minute, by the RR interval. Suppose your RR interval contains 20 small squares, then it is 0.04 multiplied by 20, that is the 0.8 seconds. This means the duration of one cardiac cycle in this person, whoever is being whose electrocardiography is being studied, is normal cardiac cycle. So 60 divided by 0.8 is equal to 75 beats per minute. So this is how you calculate the heart rate. This is the most logical one. So I have given you the most logical one, and the rest of them, there are others as well. You can learn them in your practical. Now coming to this, what is the normal rhythm at which an SA node drives the whole of the heart? It is 70 to 80 beats per minute at rest, and this is 75 beats that you have seen. So if the SA node has a speed of 70 beats per minute, the AV node will follow the same speed, 70 beats per minute. The Purkinje fibers also will follow the same beats, 70 per minute, and the contractile cells will go on the same rate. So with normal pacemaker activity and normal conducting tissue, the whole train will go at 70 beats per minute.
Now we are going to study the cardiac arrhythmias or the defect in the heart rates in the heart whenever they occur. So first of all, we must know what is the normal sinus rhythm. The normal rhythm generated by the SA node in the heart is 70 beats per minute at rest, and the normal range is 60 to 100 per minute. So, normally the heart rate can be below 70 beats per minute during sleep and in athletes. Athletes में क्यों होगा? Vagus nerve has got a stronger hold of the SA node as compared to the sympathetic nerves in the athletes, and so the effect of vagus is to decrease the heart rate, so it decreases the heart rate from 70 down to 60 beats per minute, and this is not at rest, but normally it is not at rest but during sleep, and it is seen in athletes because of the increased vagal tone. The heart rate increases normally during exercise, during anxiety, emotions, and in fever. Fever is the temperature is the reason for increasing the heart rate during fever, and during exercise increased demand of the body to supply blood. It is a physiological condition, so it will be called a normal increase in the heart rate rather than saying that it is abnormal. Why should it go up? You need it, and so body arranges so such mechanisms which increase the heart rate. And in anxiety the sympathetic stimulation increases and the heart rate may go up to 100 per minute. Bradycardia will be designated to a situation when the heart rate is below 60 per minute, and tachycardia is stated to occur when the heart rate is above 100 beats per minute. Now look at these diagrams. This is a normal sinus rhythm. Okay, it is regular. Lead ABR and lead 2. Now look at this bradycardia. This is far away as compared to this one. 1 2 3 4 4.5 इसमें तो आपके पास 22 स्मॉल स्क्वायर्स है इसके अंदर आपके पास, जबकि इसके अंदर आपके पास जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें आपके पास 30 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं वो आर इंटरवल में डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, और 30 स्मॉल स्क्वायर्स जब आर इंटरवल में डिस्टेंसिंग करेंगे तो आपका हार्ट रेट जो है वो 60, इसमें आपका हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाएगा। और इसके अंदर आप लीड 2 में देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 12 स्मॉल स्क्वायर्स मौजूद हैं बिटवीन 2 आर वेव्स। इसमें हार्ट रेट जो है वो तेज है। सो ईसीजी कैसी नजर आएगी जब हार्ट रेट स्लो होगा? ऐसी। और ईसीजी कैसी नजर आएगी जब हार्ट रेट तेज होगा? ऐसी। जल्दी जल्दी आने वाले कॉम्प्लेक्सेस। Sometimes you will be recording the ECG and you will see that there is a little variation in the R waves in different segments of the ECG that are recurring again and again. If you take a rhythm strip, the rhythm strip is taken in lead 2 and it is taken for full 1 minute. So if you take a rhythm strip, you will see 3 or 4 phases in which there is increased heart rate to a little extent, and then decreased heart rate to a little extent, and then going back to normal size. So this is changes with phases of respiration. Sinus arrhythmia, this is called sinus arrhythmia, spillover of impulses from respiratory center to vasomotor center. ये है आपका ब्रेन में, ठीक है। वाजोमोटर सेंटर भी ब्रेन में है और रेस्पिरेटरी सेंटर भी ब्रेन में है। दे आर लाइंग जस्ट नियर टू ईच अदर, adjacent to each other. So whenever the respiratory center is increasing the rate of respiration, it also gives impulses to the vasomotor center, which increases the heart rate. And when the respiratory center is silent for expiration, the vasomotor center is no more further increased by the sympathetic nerves, and this decreases the heart rate.
So I will just read it out for you. Spillover of impulses from respiratory center to vasomotor center. ये ब्रेन स्टेम में आपके पास होते हैं. कम से कम ब्रेन स्टेम जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो आपने एफएससी में जरूर पढ़ा हुआ है कि वो कहाँ होता है ब्रेन में. तो ये वहाँ की जगह पर है, तो वहाँ से आ रही हैं impulses. Causes alternate increase and decrease in the number of impulses from sympathetic and vagus nerve to the heart. वाजोमोटर सेंटर ने जब रेस्पिरेटरी सेंटर ने जब स्टिमुलेट होना है तो वाजोमोटर सेंटर के सिंपैथेटिक पोर्शन को स्टिमुलेट कर देना है, और जब रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्वाइट होगा तो वाजोमोटर सेंटर का वेगस पोर्शन जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा. Lungs stretch during inspiration and inhibit the vagus nerve and stimulate the sympathetic nerves, and this increases the heart rate. ये एक और रीज़न है, और ये आपको उस वक्त समझ में आएगी जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे और कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में आप सारे रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे होंगे. इस वक्त आपको सिर्फ इसको रट्टा ही लगाना है. सो ये बात बनी कि जब इंस्पिरेशन हो रही थी तो लंग्स जो थे रिफ्लेक्सिस के स्पिल ओवर की वजह रिफ्लेक्स स्ट्रेच ऑफ द लंग्स की वजह से रिफ्लेक्स हुआ था शुरू, जिसने के हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था. और जब एक्सपिरेशन हुई तो लंग्स डिफ्लेट हो गए और उस Now, sixth sinus syndrome is the first arrhythmia disease that we are studying. Before that, whatever we were studying was normal. It is the disease of the SA node, and because of that, it produces bradycardia. Bradycardia below 60 beats per minute. When there is less blood supply to the less beating of the heart, there is less blood supply to the brain, and the person can become dizzy and can become unconscious. It is seen in elderly, in drug toxicity, in hypoxia, in infection and hyperkalemia. Drug toxicity, any drug that inhibits the prepotential will cause this disease. Hypoxia means decreased oxygen tension. When the SA node is not having good ATP in it, it will have problems in generating the impulse. Infection, sometimes the bacteria or the viruses can produce such toxins which affect the activity of the SA node. Hyperkalemia, increase in the potassium level of the blood, does affect the SA node. आपको सारा बताया है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो काम ही इसके जरिए करती है. So in this case, in the sixth sinus syndrome, there is bradycardia, marked bradycardia. Second disease which you are going to study here is the Stokes-Adams syndrome. The diagram is here and the description is on the next slide. The SA node is normal and it is beating at and it is producing impulses at 70 impulses per minute, but the AV node is temporarily derailed. There is no contact with the AV node, so the only pathway from the SA node to the ventricles, transmission of impulse only can occur through the AV node, and when it does not occur, the Purkinje fibers start generating their own impulse, and then the rate of Purkinje fibers is 30 beats per minute, so the ventricle beats at 30 beats per minute, and you will see that the atria are beating at 70 beats per minute, and that will be seen only in ECG because uh, you cannot see that on pulse. So Stokes-Adams syndrome is a transient AV block. So when the block suddenly appears, then the ventricles who are in a habit of taking impulses from the AV node are waiting for the impulse to come. And when the impulse does not come, they do not know what to do. They just keep quiet. This produces a delay of 5 to 30 seconds, and this is because of overdrive suppression, meaning that when they are in a habit of being driven by the SA node and the AV node, so they are quietly sitting and waiting for the impulse to come. So this is overdrive suppression. During this period, the brain gets ischemia because 5 to 30 seconds is a lot of time, and there is fainting. If this continues for a longer time, this can also cause death of the because of the brain. After this time, 5 to 30 seconds, the Purkinje system
beyond the block begins discharging rhythmically. आपको मैंने बताया था कि परकिंजी सिस्टम में भी ये कैपेसिटी है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है, इसमें भी ये कैपेसिटी है, ये पेस मेकर का काम कर सकती है अगर इसको पीछे से एवी नोड या एसए नोड डायरेक्शंस ना दे रहे हों. So at this time, the Purkinje system beyond the block begins discharging rhythmically at a rate of 15 to 40 beats per minute, and this is called ventricular escape. So ventricular escape is different from overdrive suppression. Overdrive suppression was the silence in the ventricles when they were waiting for the AV node to give them orders, and they escape from this silence when the order is not coming for a prolonged time, that is more than 30 seconds. Now we have done those sinus arrhythmias, and we are now doing supraventricular arrhythmias, and supraventricular arrhythmias means that there are problems in the generation of impulses. Abnormal generation of impulses is occurring between the SA node and the ventricle, and this is, there are types of it. So one of them is atrial premature beat. There is some problem in the atrial muscle, and this muscle is generating impulse abnormally. It was not generating impulse by itself previously. ऐसे नोट से impulse आ रही थी, मसल्स में जा रही थी और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो खुद से कोई जनरेट नहीं कर रहे थे impulse. लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है एट्रियल मसल में तो कभी कभी ये खुद भी कोई impulse जनरेट कर देता है. कॉमन कंडीशन है ये. इट इज इंक्रीज्ड इन स्ट्रेस, इन कैफीन इनटेक एंड इन एंजाइटी. This is a normal P wave. This is normal QRS complex, normal T wave, and a normal TP segment. When an abnormal P wave has to come, this is normal P wave, this is normal QRS complex, and the T wave was coming here, and at the time of the T wave, suddenly without any TP segment, while the T wave was down going, a P wave has appeared. And this is abnormal premature beat because the time was to come after TP segment and it has come during the fall of the T wave. So this is abnormal, and this whole complex is the atrial premature beat. Because of this, the patient may feel that I have got irregular pulse. After this beat, there is a pause during which the sinus rhythm is reset. अब आपकी ये जब आ गई ना पी वेव यहाँ पर, ठीक है, तो जब जब भी एट्रियल प्रीमेच्योर बीट होती है तो एट्रियम से फिर वो, ये नहीं है कि वो सिर्फ आगे की तरफ ऐसे एवी नोड की तरफ चलेगी और फिर वेंट्रिकल की तरफ चलेगी. चूंकि वो एट्रियम में है तो वो चारों तरफ चलेगी. सो एसए नोड की तरफ भी पहुंचती है, और एसए नोड की तरफ जब एसए नोड से इम्पल्स निकल रही थी और एक इम्पल्स उसकी तरफ पहुंच गई, उन दोनों का इम्पल्स का टकराव हुआ तो एसए नोड जो है उसकी इम्पल्स आगे ट्रांसमिट नहीं होती. और फिर जब ये पूरी पूरी एट्रियल प्रीमेच्योर बीट अपना काम कर चुकी होती है, आफ्टर दैट देयर इज अ पॉज बिकॉज द नॉर्मल इम्पल्स विच वाज टू कम फ्रॉम द एसए नोड इज नॉट कमिंग बिकॉज इट इज इन अ स्टेट ऑफ refractoriness, and then the SA node resets itself, says no, it is my job to create a rhythm, so it does create a rhythm, and this new rhythm is here, and this is the TP segment that is coming after the premature beat, and this is longer as compared to this TP segment. The premature beat can come either from the atrial muscle, where some excitable tissue has been produced by ischemia or caffeine or anxiety, or it is coming from the AV junctional tissue. आपको AV junctional tissue की diagram याद है? वो जो आपने AV नोट पर देखी है, AV नोट थी पहले पहले आपके पास ये कंडक्टिंग फाइबर्स थे, फिर तीन छोटे बन गए थे उसकी ब्रांचेस, फिर वो एवी नोड में चला गया था. तो जो जहाँ पर ब्रांचेस एंटर हो रही होती हैं एवी नोड में, उसको कहते हैं जंक्शनल टिश्यू, एवी जंक्शनल टिश्यू. तो या तो वहाँ से इम्पल्स आ रही है या फिर मसल से. शेप ऑफ द पी वेव इज डिफरेंट because it is not originating from the SA node, not traveling the normal routine pathway. It comes before the routine P wave because TP segment is lost and the routine P wave was to come
later on. Shape of the QRS and T is normal. Because after passing through the AV node, the pathway is the same as otherwise it would have been. So this is the diagram which I was mentioning to you. These are the three small branches that are entering the AV node, and the impulse that was ectopic impulse generated by the supraventricular ectopic beat would have come from this site. Now, if a sudden run of 3 or more beats comes, which is faster than the normal sinus rhythm, then it will be actually an atrial focus which discharges regularly and is then followed by the sinus rhythm. 3 or more rhythms coming from the atrial muscle or from any conducting tissue between SA node and the AV node could cause paroxysmal supraventricular tachycardia. The ectopic focus fires more rapidly, क्योंकि जब पिछली दफा तो उसने एक ही इम्पल्स दी थी, अब अगर वो मोर रैपिडली कर रहे हैं देन द एसए नोड, तो फिर उसी की इम्पल्सेस चलती हैं. द एक्टोपिक फोकस इज यूजुअली एट ट्रांजिशनल फाइबर्स अराउंड द एवी नोड. इट स्टिमुलेट्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली. अब ये डिसाइड हो गया कि अगर पीछे से कोई इम्पल्स नहीं आ रही और यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो रही है तो वो पीछे भी जाएगी और आगे भी जाएगी. Stimulates atria and ventricles simultaneously. A bypass route is available that allows the sulcus movement between atria and ventricles, allowing re-entry of impulses. और ये हम करेंगे बाद में, bypass route की बात बाद में करेंगे. अब ये देखें आप, एट्रियल फ्लटर का नाम आप देख रहे हैं. एट्रियल फ्लटर जो है वो अब आपके एग्जाम क्वेश्चंस में से आ गया. सुप्रावेंट्रिकुलर एक्टोपिक यानी एट्रियल प्रीमेच्योर बीट आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है. सुप्रावेंट्रिकुलर पैरोक्सिस्मल टेकीकार्डिया भी आपको ये समझने के लिए ज़रूरी है कि भाई इसमें होता क्या है. लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो चीज़ आपके पास इम्पॉर्टेंट आई है वो है एट्रियल फ्लटर. एट्रियल फ्लटर में आप देख रहे हैं पी वेव्स, 3 पी वेव्स आ गई और फिर एक वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आया, इसके बाद टी वेव आई और फिर 3 पी वेव्स आ गई, इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आया, फिर टी वेव आई. तो आप ये देख रहे हैं कि रेगुलरली फास्ट बीट्स चल रही हैं. ये कोई स्लो बीट्स नहीं है, फास्ट बीट्स हैं. ये मुझे बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में जब आपने एवी नोडल ब्लॉक्स पढ़ने हैं तो उसमें भी पी वेव्स ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन उसमें हार्ट रेट स्लो होता है. तो आए अब देखते हैं इसमें हार्ट रेट कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्मॉल स्केयर्स के बाद आपके पास एक बीट आई है वेंट्रिकुलर. इसमें आप देख रहे हैं कि एट्रियम में एक्टोपिक बीट, ऐसे नोट खामोश पड़ी है. यहाँ पर कोई फोकस ऐसा है जिसने के एक्टोपिक बीट्स दे दी हैं, शुरू कर दिए इम्पल्सेस. अब ये घूम रही हैं, ये एक ही फोकस से बीट्स बार बार घूम रही हैं, इधर जाती हैं फिर इधर जाती हैं फिर इधर जाती हैं, और फिर जब रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द एवी नोड ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से वेंट्रिकल में स्पिल हो जाती हैं. जब ये साइकिल अपना पूरा कर लेती हैं तो पी वेव बन जाती है. फिर ये अपना दूसरा साइकिल पूरा करती हैं इसी तरह इम्पल्स सारे के सारे घूम कर, तो दूसरी पी वेव बन जाती है. फिर ये अपना साइकिल पूरा करती हैं तो तीसरी पी वेव बन जाती है, और फिर उतनी देर में एवी नोडल डिले का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और इम्पल्स जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाती है. तो फिर आपका ये कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स आ जाता है. उसके बाद उसकी टी वेव आती है,
پھر شروع ہونے کی باری آتی ہے تو دوبارہ سے پی ویوز، اسی طرح 3 پی ویوز آ جاتی ہیں، اور 3 پی ویوز کے بعد ایک اور وینٹریکولر کمپلیکس آتا ہے، کیونکہ اے وی نوڈ نارمل طریقے سے ڈیلیوری دے رہا ہے ٹو دا وینٹریکل، لیکن ایٹریا کے اندر بار بار پی ویوز بن رہی ہیں اور گھومے جا رہی ہیں کیونکہ ان کی سپیڈ بہت فاسٹ ہے. تو اگر ایک پی ویو کو آپ ایک سائنس ردم سے سوچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 20 اسمال اسکیئرس کے بعد اندازاً ایک پی ویو آنی چاہیے، لیکن یہاں پر پی ویو کس طرح آ رہی ہے، 1 2 3 4 5 اور 6 اسمال اسکیئرس کے بعد آپ کو دوسری پی ویو نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ردم پروڈکشن ہے ان دا ایٹریل ایکٹوپک فوکس وہ زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے، 250 to 350 سائیکلز پر منٹ چل رہے ہیں ایٹریا میں، لیکن پی ویوز جو ہیں ان کی نارمل والی شکل نہیں ہے بلکہ ایک خاص ایک جیسی شکل کی کچھ سو ٹوتھ اپیئرنس، آری نہیں ہوتی، آری کے دندانے ہوتے ہیں، سو ٹوتھ اپیئرنس کی ایک جیسی شکل کی ویوز آ رہی ہیں. ان کو آپ پی ویوز نہیں کہتے، ان کا نام ہے ایف ویوز، اور یہ ایف آپ نے کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہوتا ہے. اس ایک سنگل فوکس سے جہاں سے یہ پی ویوز بن رہی ہیں ری انٹری ہو جا رہی ہے ایٹریا کے اندر، لیکن اے وی نوڈ سے جو نارمل اے وی نوڈ ہے اس میں سے وینٹریکلز کے اندر وہی امپلسز جاتی ہیں جو اے وی نوڈل ڈیلے کو کور کر چکی ہوتی ہیں. سو وینٹریکولر ریٹ جو ہے وہ ایٹریل ریٹ سے فرق ہوتا ہے، اور یہ 150 بیٹس پر منٹ ہو سکتا ہے، 100 بیٹس پر منٹ ہو سکتا ہے، یا 75 بیٹس پر منٹ ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ کہ اے وی نوڈ اس وقت آپ کو کتنی بیٹس کو الاؤ کر رہی ہے کہ وہ گزر جائیں اور وینٹریکل میں چلی جائیں. یہ جو ایٹریل فلٹر اس کا نام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایٹریا کے اندر امپلسز ڈیپولرائزیشن کرتی ہیں اس تیزی کے ساتھ ایٹریا جو ہیں وہ دونوں وہ بیٹ کرتے ہیں. آپ کسی پرندے کو دیکھیں جو اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلٹرنگ ہے پروں کی. تو ہارٹ بیچ میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے دونوں سائڈز پر ایٹریا ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہوتا ہے، بیٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگولرلی ایک خاص ردم سے، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ اسے ہم کہیں کہ جیسے پرندے پھڑپھڑا رہے ہیں اپنے پر، تو یہ ایٹریل فلٹر کہلاتا ہے. اس کا ریٹ فرق ہوتا ہے، اور وینٹریکل کا ریٹ جو ہے وہ 150 یا 100 یا 75 بیٹس پر منٹ. So this is your exam question. Atrial fibrillation, when the atrial muscle, rather than having impulses from the SA node, gives multiple impulses. یہ جہاں پہ ایرو کا شروع کا ایریا ہے وہ اس کا پوائنٹ ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے امپلس، اور جو ایرو کا آخری ایریا ہے وہاں پہ ہے کہ یہ ٹریول کر رہی ہے. سو یہاں سے ایک امپلس اوریجنیٹ ہو رہی ہے، ایک یہاں سے، 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 اور ایک یہاں سے. تو باقی تو آپ کے پاس پچھلی جو سلائیڈ ہے اس پہ 9 منٹ کی ڈسکرپشن موجود ہے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جب اب نارملی انلارج ہو جاتے ہیں ایٹریا، تو پھر ان کی بلڈ سپلائی تو اس حساب سے انلارج نہیں ہوئی ہوتی. دوسری طرف جب لیفٹ وینٹریکل میں سسلی آف دا ایٹریا نہیں جاتی، آخری پورشن کمزور ایٹریل مسل کی وجہ سے، تو بلڈ اسی میں رہ جاتا ہے، اور بلڈ جب اس میں رہ جاتا ہے تو اسٹیسس ہوتی ہے. اسٹیسس سے بلڈ سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں کم جا رہا ہے تو یہاں سے آگے بھی کم جائے گا. بلڈ سپلائی آف دا ہارٹ کم ہو جاتی ہے تو ایٹریا جو بڑے ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے، ویلولر سٹینوسس، ویلو کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، یہ ایٹریا جو ہیں ان کی سائز بڑا ہو گیا ہے، ان کو بلڈ سپلائی ملی نہیں ہے، تو اس کے اندر ایکسائٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. ان اے ڈیمانڈ ٹو گیو می مور آکسیجن، گیو می مور آکسیجن، they are trying to cry, and the way they cry is they produce excitatory impulses. Now these excitatory impulses do not travel the whole of the pathway normally through which the SA node used to depolarize the atria. So now they are depolarizing small segments here, small segments here, small segments here. So they are not
at one time depolarizing the whole of the atrium, and because of this there is no atrial systole. Atrial systole तो पूरे ventricle ने पूरे atrium ने अच्छी तरह depolarize होकर एक ही वक्त में contract करना था, तो चूंकि ये एक ही वक्त में सारा contract नहीं कर रहा है पूरा ventricle, so there is no atrial systole. Multiple wave fronts are present and they are producing these small f waves in the ECG at irregular intervals.